Hello and welcome. I'm Parul Sharma and you're watching Zoom TV. Please join me in welcoming Amol Parashar, an actor who's had a chock-a-block year full of releases in 2021 with many more exciting things coming up this year. Hi Amol, welcome back. Hi Parul. Hi Parul. How are you? I'm good. How are you? Last we I'm good, spoke yeah. was before Feels Like It's released. Since then, you've had Sardar Udham and Cash, which of course saw you in a leading role space. How did Hmm, it feel hmm. to be nice and busy during a year that was so slow for so many people? या आई नो 2021 बहुत लोगों ने होप किया था, हम सब ने होप किया था कि चीजें खुल ही जाएंगी, खत्म हो जाएगा सब पैंडेमिक वगैरह आफ्टर द वैक्सीनेशन स्पेशली. Yeah, बट आई गेस दैट वाज नॉट टू बी. थोड़ा थोड़ा चीजें खुली, थोड़ा सा हमें थोड़े थोड़े विंडोज मिले, कुछ चीजें रिलीज हुई, फिल्में भी रिलीज हुई. बट ऑफ कोर्स ऑल माय रिलीजेस वर ऑन ओटीटी. yeah, बट ये भी है कि ये सब मैंने शूट पहले ही कर लिया था ना. ऐसा exactly. नहीं है कि मैं पिछले साल ही सब शूट किया और आया, मतलब दे ऑल केम टुगेदर बिकॉज आई थिंक वो अपना टाइम होता है हर चीज का. तो इनफैक्ट सरदार उधम एंड कैश बोथ आई हैड स्टार्टेड बिफोर द पैंडेमिक ओनली. Yeah, yeah, तो शूटिंग वूटिंग हम लोग नॉर्मल टाइम्स में, जब मास्क वास्क होते भी नहीं थे, जब ये सब आते, हमें पता भी नहीं थी कि क्या होने वाला है, ये तब yeah, की शूट की हुई फिल्में हैं. एंड ऑफ कोर्स एट दैट टाइम इवन द प्लान्स वर डिफरेंट. अगर ये सब नहीं absolutely. हुआ होता तो probably we would have seen them coming out in the theater. But जो भी है अच्छा है. It was काम meant to हुआ, be like काम that. बाहर आया, हाँ काम आया और लोगों को पसंद आया. I think I feel at home at OTT, in OTT especially because I'm not Absolutely. attached to कि अरे मेरा फिल्म थिएटर में क्यों नहीं आया, यहाँ क्यों आया. This is new for me. Of course this is not new for me at all. This is home. Yeah. मतलब मैं टिप्स दे सकता हूँ लोगों को कि ओटीटी पे क्या होता है और कैसे होता you है. क्या you are the करना चाहिए. veteran, OTT veteran, हाँ, huh? Like web मतलब space ओटीटी वर्ड भी veteran. नहीं था तब, हम वेब शोज कर रहे थे. Absolutely. माय फर्स्ट शो वाज इन 2016. तब ओटीटी वर्ड मतलब ओवर द टॉप के लिए यूज होता था. अच्छा वर्ड नहीं था वो. वो लोग बोलते थे ओटीटी एक्टिंग मत करो, थोड़ा कम करो. Very true, very true. You have 36 Farmhouse coming up next. Congratulations on the trailer. Looks थैंक like यू, a थैंक यू वेरी मच. mad ride. It's an या ensemble cast with some great actors. What were some of या like the या most memorable moments from shooting that movie? Any impactful learnings from veterans like Subhash Ghai and Sanjay Mishra? इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप फॉर मी बिकॉज मोस्टली जो मैंने काम किया है, मोस्टली वो देयर आर पीपल either my age or my generation, or we've grown up watching the same films or reading the same books. But this is a completely different set of people, which is Absolutely. new, which is a good thing because you get to learn some new things. नहीं तो आप अपने ही तरह के लोगों से अपनी ही तरह की चीजें सीखोगे. So that was, I think, one of the biggest reasons why I got into this also. In the beginning, it's a little like, अरे मैं जानता ही नहीं, this is a different world altogether. Subhash Ghai, who am I kidding? Yeah. And actors I have watched and loved, but how will it be to collaborate with them? But that was the excitement. Working with somebody like Subhash Ghai, who's been making films for 40 years. आपको लगता है कि सर आप क्या जरूरत है, आप रेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, आप आराम करो. But no, he still wants to make a film. He still wants to write a film. He still wants to wake up in the morning every day and be there on time before us. He still wants to experiment with new things. He has done the music for the film. He has Right. composed the two songs. So after 40 Poetry years of also. other people composing for him, now he's saying, "चलो मैं नया चीज try करूंगा life में." ये risk taking, तो मतलब मुझे लगता है कि I am too old for. Sometimes I have to remind myself कि भाई नहीं, कुछ नया करना है, risk लेना है life में. But so that was quite nice. And working with Sanjay Mishra and Vijay Raj, it's like so impeccable in their craft. मतलब कि वो ऐसा नींद से उठा के खड़ा कर दो तो brilliant performance दे देते हैं वो लोग. Absolutely. So that, I think, just watching them, doing those scenes with them, and they're also very instinctive actors. They're in their own style. So it's not like कि अच्छा मैं अपनी लाइनें याद करके आया, सर आप अपनी लाइनें याद करके आए और चलो मैंने अपनी लाइंस बोल दी, आपने अपनी लाइंस बोल दी. Sure. That's not the kind of actors they are, especially Sanjay sir. उनको है कि यार ये सब ठीक है, लाइनें याद कर लिया, अभी इसको हटाओ, अब बताओ क्या करे, आओ अब बोल बैठते हैं, कुछ सीन बनाते हैं. So Blank that slate. is a very blank slate, and taking it to the next level, adding using our characters and layers. Sometimes even in the written scene is there's nothing wrong with it. It's Sure. taking the story forward. But as an actor, if you're smart and if you are aware of what's happening in the story and your character, you can take it to the next level. आपको एक चाहे वो
जोक ही है या वो एक इंटरेस्टिंग मोमेंट ही है, इफ यू आर एबल टू ऐड, यू ऑल्सो फील कि मैंने भी कुछ किया ना, नहीं तो सब कुछ तो Absolutely. बाकी लोगों ने किया है। स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा, कपड़े किसी और ने दिए, खड़े यहाँ पे होना ये किसने बताया, लाइन क्या बोलना है किसी ने बताया, सो दैट इज मोर satisfying sometimes. Of course, it has to be in the Absolutely. right space. It can't be कि चलो मैंने बस डालने के लिए दो लाइन As चेंज an कर दी या ऐड कर दी. as an actor, do you think you're more instinctive or more like you need your preparation and everything? Like, does it come instinctually to you, or do you feel like you need to be prepared and have it like ready and then go into it? I think I can do both, and I have enjoyed both at different times. And what I think personally I started to do was I started to decide this on the basis of the story and the character. कि कुछ characters, for example, when I was shooting the second season of Tripling, तो मुझे था कि यार मुझे पढ़नी ही नहीं है स्क्रिप्ट. मैंने Yeah. पढ़ी नहीं, मैंने मना कर दिया. मतलब नॉन रीडिंग नरेशन ये वो मैं तो कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं कर रहा हूँ, and I played this character before. I am just going to come as Chitwan and you tell me then कि कहाँ खड़ा Yeah. होना है और क्या बोलना है. So I'm not going to plan, I'm not going to learn my lines. And, Right. but this doesn't come from a place of irresponsibility. This doesn't come from a place of laziness कि यार मुझे lines याद नहीं करनी है. This comes Sure. from a place of a deliberate decision. कि यार Right. this is, if I plan, if I think, overthink, that's not the kind of character this is. And how we shoot and how, how I know how we shoot the show also and the scenes. But of course, if it is a Sardar Udham, I am going to learn all my lines. Do your I'm going to, research. yeah, do my research, read the books. I'm reading books on Bhagat Singh while I'm learning the scenes, and I'm on set, with every word put out in my head. Because then we'll figure out. Then I will listen to my director. I listen to Subhash sir, and then do what is needed to be done in the scene. But Absolutely. I can't mess around, or it's not something that you can just like, अच्छा ये नहीं बोला तो ये बोल दिया. That's not the kind of character it is. Of That's course. not the kind of film that is. So different approaches, I Scenarios. guess. Right. Yeah. Was it daunting at all taking on a Bhagat Singh when we have had such like iconic performances of that in the past? I know the way that you did it was absolutely different from the way that it's been portrayed on screen before, and it was very nice to see that interpretation of it as well, because we haven't seen it. But was it daunting? Like, did you feel like big shoes? I mean, it was a little bit of a, yeah, in theory, it was a big sentence to say out loud कि I am playing Bhagat Singh in Shujit Sarkar film. So the facts of the matter were a little, what is intimidating a little bit. But from the first meeting onwards, that feeling started to get taken care of by Shujit sir. Because he must have figured कि हाँ ऐसा होगा, अभी वो आएगा, वो सोचेगा कि मेरे को भगत सिंह करना है, कुछ कैसे करूँ, मैं ऐसे करूँगा, सेट में वैसे करूँ. So फर्स्ट मीटिंग से ही उन्होंने बोल दिया कि यार भूल जाओ जो तुमने देखा है, जो फिल्मों में बड़े होते हुए देखा है. It's all, I mean, I'm not saying there's anything wrong with that, but forget that, because you are the actor, I'm the director, and this is the script, and this is this thing, and let's assume कि इससे पहले आज तक कोई फिल्म नहीं बनी है. and this is the first time we are playing this character, so we'll also then create it together. We won't go by कि पहले किसने कैसे किया था या किसने कैसे interpret किया था. We will create it together. Of course, historical material तो है ही, सबके पास है, but how we interpret it, you and me as a director and actor, this is, let's create that person. And always, I think generally in the film and otherwise also in his politics, he wanted to show that these were real people. Yeah. These were, especially Bhagat Singh was a young kid. हम हीरो बना के पोस्टर बना के दीवारों पे छाप देते हैं उनको, और भूल जाते हैं कि they were also, young people, passionate people, well read. They also had their desires. They also had their dreams. So I think that is the kind of humanity that I realized after meeting Shujit sir, ki this is what he's trying to achieve in the film. Yeah. Even Sardar Udham's character, this is, you don't see them just like sloganeering and being like angry all the time. Absolutely. They are angry, they are frustrated, they are desperate, they are sleepless, they're anxious, they're hungry, they have their likes and dislikes. So I think that humanity was important.
Yeah, he sat with So I interviewed him for Sardar Udham, and he was talking about how he sat with the movie for so many years, and he was yeah, very clear in yeah, his head how he wants to sort of go about it. And yeah, do you yeah. think it helps as an actor for you when a director is very clear with his vision, or do you prefer, let's not say prefer, because I don't think you would say that, but do you like it when you have like more of a leeway to sort of do your own thing, and you have the time to like improv and make it up on the spot? What do you prefer as an artist? Again, I think दोनों enjoy कर सकता हूँ मैं. I've also been a teacher pleaser all my life. You know, I was a good student. The kid in the कि front. हाँ, I well, know. not necessarily in the front and not necessarily like in the obvious way कि आप उनकी तारीफ कर रहे हो या कुछ. Pleaser by कि मतलब what was the way to please teachers was to be good at what you're doing. Really That good was at my your way job. of हाँ कि मैं अगर मैं फर्स्ट आऊंगा तो मेरे को टीचर्स पसंद करेंगे. नॉट बिकॉज मैं उनके लिए मिठाई लाऊंगा और मैं उनकी तारीफ करूंगा. वो वाला नहीं, वो वाला तरीका नहीं चाहिए था मुझे. जेन्युइन तरीका चाहिए था कि यार व्हाट डू दे वांट यू टू बी अ गुड स्टूडेंट. दे वांट Yeah. यू टू डू दिस. आई वांट टू प्लीज माय टीचर बाय कमिंग फर्स्ट इन द क्लास. So वो I think that We is would have my not dream. gotten along if we were in the same class together. Just know. हाँ, तो नहीं मतलब कि वही मैं बोल रहा हूँ कि which is why I clarified कि it was not like टीचर का पप्पू टाइप. Yeah. वैसा वाला नहीं. In fact, I would get scolded also. I would be naughty or whatever. But Sure. you know what I mean कि जो काम दिया है अगर वो काम आप अच्छे Be से good at करो what तो you ये do. सब चीजें ये सब चीजें नहीं फर्क पड़ता टीचर्स को. In fact, that is the most organic way to please the teacher because वो टीचर्स को ही पता होता है कि जब आप उनको मक्खन लगा रहे होते हो. वो हमसे 10 15 20 साल बड़े होते हैं. Absolutely. So there have been times when I have worked with people who are known to be very hard taskmasters. People will call and say, I shot with Habib Faisal. I love him, but people used to call me and say कि कैसा है, डर तो नहीं लगा, डरना मत, रोना मत. क्यों ऐसा ऐसा क्यों होने वाला? Apparently he's a very strict director and very hard taskmaster, but I got along because I realized कि अच्छा ये दिखा बस. अरे आप बोलो सर, आप 20 टेक बोलो, मैं 20 टेक करूंगा, मैं 25 करूंगा. I'll keep doing because you are my director, but as long as I trust that person. Sure. So what I realized कि डायरेक्टर में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है. क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो आपने पूछा ना, दोनों चीजों में आप गड़बड़ हो सकती है कि कोई बोले कि नहीं ऐसा ही करना है और इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है और उंगली भी नहीं हिलानी है इसके अलावा. सो यू विल ओनली डू इट कॉन्फिडेंटली इफ यू ट्रस्ट कि अच्छा ये जो भी बोल रहे हैं या बोल रही है ये सही है, ये सही होगा. मतलब उनको पता है क्या हो रहा है. ये सिर्फ उसके लिए नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वो सच है, वैसा नहीं है. उनको पता है क्या करना. एट द सेम टाइम there can also be times when everything is so improvised. आपको डर लग रहा है कि यार किसी को पता भी है कि क्या रहा है, क्या हो रहा है. हाँ मतलब कि हर वहाँ जो मन में आए बोल दो. हाँ यहाँ जहाँ जैसे करना है कर लो. So that can also throw you off. Then again you need the trust. Then again you need to trust कि अच्छा ये ठीक है. मतलब sometimes I'll go and ask in those cases कि हुआ, मतलब सीन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमने मजे तो बहुत ले लिए. हाँ improvise कर दिया, ये कर दिया, but did you get what you wanted to get? Sure. And then if that person says yes, you have to have that trust in that person. Ki haan, oh, okay. Then theek hai. Then I trust you. Then let's move on. Let's not worry about it. So I guess it's eventually about trust. Agar trust hai ki haan, this person knows what they're doing and has a vision, then it comes to style. Like even in this case, like we said, we're talking about Sardar Udham, lines wise, I knew I didn't want to change too much also, but it's not like everything was very fixed. Sure. So what he had in his mind was the story, was the characters, but it's not like he's fixed the blocking before the actor and said कि यहीं खड़ा होना है, अब यहीं बैठना है और ऐसे ही so करना that है. kind of actor body and mind freedom was still there. That awareness is good. I mean that you feel safe. कि अच्छा मैं भी respected हूँ, मेरा process भी respected है कि हाँ अच्छा इनको पता है. Now we are going to pivot into some fun parts of this interview and play a fun quick game so that our viewers can get to know you better. We're going to do a deep dive into all things Amol Parashar. What was your first ever paycheck in life and for what?
First ever paycheck, I was in a corporate job, but I think you're asking about acting. No. I'm asking about anything. I've had the most fun answers for this. Like people are like, मैं कहीं पे खड़े होके मैंने कुछ बेचा था तो मुझे 2,000 अच्छा, रुपए वैसा मिले वाला थे. फर्स्ट पेचेक. तो Like यार life stuff. हाँ, तो मैंने एक बिजनेस आइडिया निकाला था. मैं थर्ड ईयर में था कॉलेज में. आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग. तो गर्मी की छुट्टियों में लोग इंटर्नशिप वगैरह करते थे या कुछ करते थे, तो ऐसा मेरा मन नहीं था करने का. तो मैंने आइडिया निकाला कि बेसिकली आई वाज स्टडीइंग इन आईआईटी दिल्ली. तो उसमें आईआईटी एग्जाम के लिए कोचिंग होती है. 2 साल की कोचिंग होती है. मतलब लोग 5-5 साल भी करते हैं, बट यूजुअली ऑन एन एवरेज 2 साल का लोग करते हैं. मैंने भी किया था. तो अब कोचिंग पढ़ाना शुरू करते हैं बहुत स्टूडेंट्स कॉलेज के टाइम में, बट दैट्स अ बिगर कमिटमेंट बिकॉज लाइक आई सेड 2 साल का कोर्स होता है. बट मेनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आल्सो हैव एन एंट्रेंस एग्जाम, स्पेशली इफ दे आर लाइक वेरी हाई रेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट. FITG and all of that, right? FITG का VMC का बड़ा होता था कि लिमिटेड विद्या मंदिर क्लासेस की दिल्ली में. आई थिंक नाउ देयर, आई डोंट नो दे आर स्टिल देयर, बट उस टाइम पे बड़ा विद्या मंदिर क्लासेस का बड़ा नाम था. तो उनकी एग्जाम होता था और उसमें भी लिमिटेड लोग ही जाते थे कि भाई इतना 200 लोग स्टूडेंट्स ही एडमिट होंगे और विद्या मंदिर क्लासेस. नॉट लाइक एवरीबॉडी कैन गेट इन, जस्ट पे द फी. तो हमने कोचिंग के लिए कोचिंग देना शुरू किया बच्चों को. उपद्रवी दिमाग. तो यार क्योंकि बच्चों को होता था कि आईआईटी तो बनाना है, पहले विद्या मंदिर कोचिंग में जाना है, उसका एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे. तो हमने उसके लिए लोगों को कोचिंग दी. तो क्लास 10th के एग्जाम्स होते थे, तो बोर्ड सेंटर्स होते थे. तो 1-2 हमारे कॉलेज के आसपास जो स्कूल्स जहाँ पे बोर्ड के एग्जाम्स थे, सेंटर थे, तो वहाँ जाके हमने पर्चे बांटे पेरेंट्स को कि हम आपके बच्चे का कोचिंग सेंटर में करवा देंगे, विद्या मंदिर क्लासेस में कोचिंग सेंटर में करवा देंगे. हमें मिल गया यार. हमें एक पूरा मतलब वो आई थिंक वो 5-6 बच्चों का एक ग्रुप था. they used to all live in the same locality. तो हमें मिल गया एक बैच, छोटा सा बैच. हमने पढ़ाया उनसे जो भी हमने फीस रखी थी अपनी कोचिंग जो हम दे रहे थे. और आइडिया था हवा में फेंका और लग भी गया. मिल गए हमको स्टूडेंट्स और उसमें से 5 में से 4 का करवा भी दिया हमने विद्या मंदिर में. तो अगर हम कंटिन्यू करते तो क्या पता आज हम कोचिंग की इंडस्ट्री शुरू कर चुके होंगे. Perhaps you would have been the pioneers of that industry. Yeah. कि पैदा होते हुए बच्चे को शुरू कर दिया. बस निकले. Okay. Do you remember the first time in your life that you actually got recognized, or a memorable fan experience that you'll always cherish? And what was it? Yeah, I think it was actually after tripling only, I guess. Recognized because मतलब लोगों का नाम पता था. तो वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था. यूजुअली उससे पहले क्या होता था कि मतलब उसके स्टेजेस हैं फेम के. तो पहले तो मतलब शुरू में तो कोई नहीं जानता है आपको. फिर कभी ऐसा होता है कि एक सेकंड आप टीवी पे आते हैं, इतना मिलता है आपको. एंड देन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू से, हाँ या ना, कि वो बात आगे बढ़ती है. एंड देन कम्स द पॉइंट वेयर दे से कि अरे आप वो है ना जिसमें से वो है. तो उनको कैरेक्टर का नाम याद होता है कि आप उन्होंने कहाँ देखा है, आपको उनको पता होता है. फिर एक स्टेज आता है जहाँ पे उनको नाम पता होता है, आपका नाम पता होता है, अमोल पराशर. तो अपना नाम सुन के बोलता है कि ये कौन है, ये कौन है जो अनजान आदमी मेरा नाम जानता है. But then you realize that they know you, they know your real name. फिर वो स्टेज आता है जब वहाँ पे उनको वो चीजें ही पता होती हैं जो आपको लगा नहीं था कि उनको पता है, कि उन्होंने कहाँ से गूगल कर लिया. अमोल पराशर आईआईटी से है ना आप. यार ये किसने बताया. So I think that Amol Parashar came after tripling, and then post that बाकी का भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. The GK has come. हाँ, GK आ गई लोगों को. गूगल विकिपीडिया पढ़ लिया लोगों ने, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया. But I think what takes getting used to is the feeling. Like sometimes when you see a person get very excited or scared or nervous, वो used to होने में टाइम लगता है. इस फर्स्ट टाइम आपको लगता है कि because you are the same person. मैं तो ट्रिपलिंग रिलीज हुआ उससे 1 महीना पहले जो मैं अमोल था, उसके 2 महीने बाद भी उतना ही था. मैं कितना बदल गया था.
Sure. but suddenly your place in the world has changed. Because पहले जब आप ऐसे ही एयरपोर्ट पे घूमते थे और कोई आपको जानता भी नहीं था, suddenly there's 5 people and someone's like Yeah. ये रिएक्शन आपको I think थोड़ा first time second time थोड़ा सा really मेरे हो गया हाँ मतलब ऐसा क्यों हो गया फोटो खींचना है या you know people some of them are really young kids तो वो फोटो खींचते हुए हाथ हिल रहे हैं बेचारे के फोटो नहीं खींच पा रहे हैं you don't understand कि ये क्यों हो रहा है यार ये ऐसा मैंने क्या किया मैं तो वही हूँ जो था but you start to accept it eventually and it's sweet also it comes from a sweet place I know many a times what I used to find very sweet and funny is that many of the young kids will get very excited oh चितवन और फोटो पापा फोटो खींचो पापा को कुछ नहीं पता है पापा को आइडिया ही नहीं है क्योंकि पापा ने ऐसा भी नहीं है कि अरे हाँ 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 ये तो एक्टर है मैंने पता है अरे टीवी में उनको कोई आइडिया नहीं है कि कौन है ये मेरा बच्चा क्यों किसी अनजान रैंडम आदमी के पीछे पागल फोटो खिंचवाना चाहता है तो पापा फोटो खींच रहे बट पापा की आंखों में डाउट है कि देखो मुझे नहीं पता है तुम कौन हो लेकिन ठीक है मेरा बच्चा बोल रहा है एक्साइटेड तो खींच देता हूँ nice very sweet yeah that's sweet something in your career or your life that really deeply impacted you because it didn't go the way you wanted it to maybe a failure or something that you were expecting better things out of but came out to be a different way and now when you look back at it you're pretty impacted by it one show that I had done which took a lot of effort on my part, which took a lot of time on my part. This was a show that I had done for Discovery. Discovery was making fiction for the first time. I was very excited. It was a very exciting story, very exciting character. But yeah, that didn't turn out very well. But I know that physically, I probably worked the hardest. But then you realize this learning ki acha aisa hota nahi hai. No, sure. So many things have to come together at the same time for something to work. Absolutely. Yeah. Thank you so much for joining me, Amol. It's been an absolute pleasure. It's always wonderful talking to you, and good luck for everything that's coming up. Very exciting thing. Yeah, next time to मतलब like for the last 2 years, let's meet in person. Fingers crossed. Fingers crossed. Good luck. Thank you so much, Amol. You take care, Barul. Thank you. You too. Bye.